Good morning students, welcome again to our next class of chapter 2, class 7 English. I, Shweta Somra, am your English teacher and we will discuss about our gift of chappals part 3 today. In our last two parts we discussed about this chapter, a gift of chappals, which was written by Vasantha Surya. Okay, she is the author of this chapter and she is a Tamil author. Alright, so the background of the story is of Tamil area, okay, of Tamil Nadu area. Okay, so the people or the relations, whatever they call, are all of Tamil background. Alright, so there is a bit difficulty, but I prepared a characteristic chart for you all so that you could easily relate to the characters. Alright, first one was Mridu. Who is Mridu? Mridu is a young girl who is staying with her grandparents in Chennai. Okay, grandmother is called Tapi, grandfather is Tata. Okay, now her grandmother takes her to her aunt's home and the name of aunt is Rukumani. Okay, Rukumani aunt has 3 children and they were Lalli, Ravi and Meena. Okay, they were her kids. So all the 3 were cousins of Mridu. Alright, and then there were, the grandmother of all the 3 cousins was Pati. Alright, and last but not the least was Mahendran. Now who was Mahendran? Mahendran was the name of a cat which Ravi kept. Okay, Ravi kept the name Mahendran. So Lalli was listening to some music classes and Ravi and Mridu along with Meena, they all started taking care of the cat, okay, which was kept in their backyard, at their home's backyard. Now what was going to happen, we'll just check it out today. Okay, so come, let's begin the part. First let's take the hard words. First is kitty cat. You all know normally what do we call a kitten, cat, what do you call? Kitty cat, है ना. अपन normally क्या बोलते हैं cat को? Kitty, right? एक domestic सा नाम है उनके लिए, है ना. So kitty cat means informal terms referring to a domestic cat. प्यार से हम क्या बोलते हैं? Kitty come here, right? So kitty cat means informal name. ठीक है? Breed, what do you mean by breed? Breed is a particular variety of an animal. कोई नस्ल, कोई प्रजाति. Okay, breed means नस्ल. जैसे there are lots of breeds of dogs, there are lots of breeds of cows, right? So breed means नस्ल, variety of an animal. Fur, what do you mean by fur? The soft thick hair that covers the bodies of some animals. Now what do you mean by fur? Fur are soft and thick hair which covers the body of an animal. उसके जो छोटे छोटे soft से बाल होते हैं ना, cat के, dogs के या कोई भी animal के, that is called its fur. Okay. Lion's mane. What do you mean by lion's mane? जो शेर की गर्दन पे बालों का एक गुच्छा होता है ना बेटा, बहुत घना सा, very dense part of hair. Okay, that is called mane. ठीक है, शेर की गर्दन पे जो बालों का गुच्छा होता है, that is called mane. What is mane? Long thick hair that grows on its neck. ठीक है, लंबे और घने बाल जो उसकी गर्दन पे उगते हैं. Alright, so now we'll start with the chapter. Mahendran. This little kitty's name is Mahendran. Who said this? Mridu. Yes, because in our last class we read that Ravi was speaking about some Mahendran, that we will have to feed Mahendran, है ना, हमें Mahendran को कैसे खाना खिलाना है. He was thinking about that. So now we come to know who Mahendran is exactly. Mahendran is the name of the kitty cat. ठीक है, cat का नाम उसने Mahendran रखा हुआ है. Just imagine. So Mridu was impressed. She was very happy and thought, what a beautiful name. It was a real name. ये एक real इंसान का नाम था, कोई cat का नाम तो नहीं था. Not just a cute kitty cat name. ये कोई normal cat का नाम तो था नहीं, है ना, कोई nickname नहीं था, but it was a real name of a human being. Actually
His full name is Mahendra Verma Pallav Punai. Okay, so what did Ravi said? Not only Mahendran, but full name is Mahendra Verma Pallav Punai. Okay, so students, let me tell you one thing. I searched a little bit and I found that Punai means it's a cat which we call in Tamil. Okay, cat को तमिल लैंग्वेज में पुनाई बोलते हैं. ठीक है? Okay, so I want you all also to just check and find it out. But what did Ravi said? इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई. Okay, MP Punai. So this is the short name also, MP Punai for short if you like. अगर तुम्हें short में बोलना है, so you can call MP Punai, no problems. Here's a fine breed of cat. Now this is a very fine breed of cat. Okay, very special breed of cat. Just look at its fur. Ravi is saying इसके fur को देखो. Just have a look at it. It's so nice, so soft, like a lion's mane. ये ऐसी लग रही है जैसे कि एक शेर की गर्दन पे जो बाल होते हैं घने और लंबे, इस तरह से इसकी फर है. And you know what the emblem of ancient Pallava kings was? Don't you? Now Ravi is relating the cat to ancient Pallav times. Okay, now Pallavas were the rulers of the southern part of India. Okay, it was a dynasty, right? So we will not go to the history part, but just for your knowledge I will tell you, Pallavas were the rulers in southern part of India, and this Ravi is talking about those Pallava kings. Okay, that this cat is related to their family. Okay, first let's see the meanings. Emblem, an object or symbol that represents something. What do you mean by emblem? Emblem is an object or symbol which represents something. Okay, like our national emblem is what? Sarnath lion capital का जो line, four-faced line है, right? That is our national emblem. It represents our country's emblem. All right, उसका निशान आते ही हमें पता लग जाता है that this is of India, right? So various things have various emblems. Okay, like cars also have different signs. Okay, so you just can relate to it. Next one is ancient. What is ancient? Belonging to a period of history that is thousands of years in the past. Now what is ancient? Ancient means very 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 long back. बहुत ही पुराने समय की बातें हैं. ठीक है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री बट दैट टू वेरी 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 लॉन्ग बैक. ठीक है, बहुत पहले समय की बात. एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेशंस मीन्स आशा करना. एक्सपेक्टेंटली, लुकिंग फॉरवर्ड टू और वेटिंग फॉर समथिंग. एक्सपेक्टेंटली मीन्स कुछ आगे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि होने वाला है, आप ईगरली वेट कर रहे हो कि कुछ हो, जल्दी से कुछ हो, आप सोच रहे हो. Giggle. Now what do you mean by giggle? To laugh in silly way that you cannot control. Now when kids are doing some mischiefs, okay, hiding from their parents or the elder ones, what do? हंसी तो आती है ना, बदमाशी करते टाइम चोरी छुपे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हंसी तो आती है ऑफ कोर्स. सो व्हाट डू? यू गिगल. धीरे धीरे करके हंसते हो, है ना, हंसते हो ना, दैट इज कॉल्ड गिगलिंग. ओके, so let's start it. Emblem of ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Now Ravi is saying that this cat is the emblem of ancient Pallava kings. ठीक है, जो पुराने समय में हमारे तमिलनाडु पे जो राजा राज करते थे उनका एम्बलम है. ओके, उनका वो निशान है, मार्क है. He looked expectantly at Mridu. Now he was looking at Mridu so that she could also say something in reference to this part. वो भी कुछ बोलती, हाँ ऐसा ही है ना, हाँ पल्लवास का ऐसा ही कुछ वो था, एम्बलम था या नहीं था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मृदु भी कुछ रिप्लाई करे. मृदु गिगल्ड. नाउ व्हाट डिड मृदु डू? वो बस हंस के और रह गई. थिंक आई एम जोकिंग. अब मृदु हंसी तो रवि को कैसा लगा? उसको लगा कि मृदु इज थिंकिंग दैट ही इज
joking, he is lying, वो सच नहीं बोल रहा. Well, just wait, वो कह रहा है थोड़ी देर रुको. I'll show you sometime, मैं तुम्हें ये चीज़ सब बता दूंगा. I will show it to you. It's clear you don't know a thing about history. Now what Ravi is saying is, रवि मृदु को बोल रहा है अब मुझे साफ पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता. अदरवाइज यू वुड हैव सेड समथिंग. ओके, जब मैं पल्लवा किंग्स के बारे में आपको बोल रहा था तो तुम कुछ ना कुछ बोलती ज़रूर कि हाँ ऐसा कुछ था, मैंने पढ़ा था एंड सो ऑन. बट शी डिड नॉट से एनीथिंग. तो रवि कह रहा है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं आता. हैवंट बीन टू महाबलीपुरम. नाउ ही इज सेइंग टू मृदु, तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई. व्हाट इज महाबलीपुरम? इट्स अ सिटी इन तमिलनाडु बेटा. ओके, तमिलनाडु का एक सिटी है. ओके, तो वो कह रहा है कि तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई. हैव यू, गए हो? ही सेड मिस्टीरियसली, वो बहुत ही सोचते हुए बोला. वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज ताथास, 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 etc. etc. Now, he said, जब हम लोगों की क्लास गई थी महाबलीपुरम, रवि said, जब उनकी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो उसने देखा था स्टैचू. Whose statue? His ताथास. किसकी? महेंद्रन की, कैट के. ताथा मीन्स दादा, यू नो. ओके, ताथास उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के और एटसेट्रा एटसेट्रा और भी ज़्यादा उसकी पीढ़ियों की बात करने लग गया. फैक्ट इज, सच तो ये है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. नाउ दिस कैट विच इज विद मृदु, रवि एंड मीना इज महेंद्रन एंड दिस कैट इज एन ancestor of, or she has descended from these cats which belonged to Mahabalipuram in the Pallava dynasty. Okay, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. And now Ravi is saying that this cat is a very close relative of whom? Of a lion. ये एक शेर के फैमिली की नज़दीकी रिश्तेदार है. दिस कैट इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ अ लायन. ओके, जस्ट चेक द मीनिंग फर्स्ट. ताथा, यू नो, ग्रैंडफादर. डिसेंडेड फ्रॉम, अ डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली. ओके, डिसेंडेड फ्रॉम मतलब हमारे पूर्वजों के भी पूर्वजों के जो होते हैं ना, उनसे जो हम अब नई जनरेशन आई है, वी आर देयर डिसेंडेंट्स. ठीक है बेटा. सिमिलरली द कैट वॉज द डिसेंडेंट ऑफ द कैट्स विच यूज टू बी इन द पल्लव एम्पायर और द पल्लव डायनेस्टी. ठीक है. द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. ओके, नाउ पल्लवा लायन जो है वो पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम है, उसका वो मार्क है. ठीक है. अब ये बोल रहा है, और ये कैट जो है, दिस महेंद्रन विच इज विद देम राइट नाउ इज ऑल्सो एंसेस्टर ऑफ दिस लायन एंड अ रिलेटिव ऑफ दिस लायन. और लायन जो था वो पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम था. ठीक है. सो फाइनली ही वॉन्ट्स टू से दैट दिस इज अ रॉयल कैट और द डिसेंडेंट ऑफ द रॉयल फैमिली, और ये बहुत ही स्पेशल कैट है. जस्ट इमेजिन वॉट ऑल रवि इज सेइंग, है ना. क्या मजाक कर रहा है. यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट्स गोइंग ऑन, कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है रवि. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश. और रवि बोलता गया और वो जो कड़वे बेर की झाड़ी थी उसके चारों तरफ राउंड लगाता रहा और बताता रहा. वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन and he was just holding a branch, small branch of that tree, and he was moving up and down. His eyes sparkling. Now his eyes were very happy, sparkling, shining with many small points of light. Okay, in this reference we will use it in happiness. ठीक है. खुशी से उसकी आंखें चमक गई. Sparkling means चमकना. Okay.
This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram's Rishi cat. Now he is giving one more point. Okay, he is stressing on this point that this is a royal cat. So he is saying that this cat Mahendran is descendant of a Rishi cat which used to be in Mahabalipuram in the ancient times. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. और एक बात मैं आपको और याद दिला दूं. Let me remind you one more thing. What thing? That in ancient Egypt also they used to worship cat. Worship means बेटा पूजा करना. Okay? प्रार्थना करना. To pray. Cats पूजा करते थे किसकी? Cats की पूजा करते थे. कहाँ पे? In ancient Egypt. Egypt, you know, Misr. You call it Misr in Hindi, and it's a part of Africa continent. Okay? So in that, you know, you must have seen pyramids, right? Mummies. Yes, that same Egypt we are talking about. Okay? So now from India, Mahabalipuram, Ravi has reached to Egypt. Imagine what all he is doing. Now he is saying that in ancient Egypt also people used to worship cat. किसकी पूजा करते थे? Cats की पूजा करते थे लोग. How he loved the sound of his own voice. और अब वो बोलते बोलते अपनी ही आवाज़ को कितना पसंद कर रहा था. He was feeling very happy and excited to listen to his own voice. जो वो इतनी देर से नरेट कर रहा था, he was just enjoying it like anything. Meena and Mridu exchanged looks. What do you mean by exchanged looks, beta? Exchanged looks means आदान प्रदान. किसका? Looks का. Like if two people are standing and they look at each other at the same point of time, okay, that is called exchanging looks. Like if somebody is there with you, okay, more than two people are standing, and if someone says some boasting type of something, कुछ वो ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल रहा है, then जो लोग समझ रहे हैं कि वो बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल रहा है, he is boasting, तो वो दो लोग आपस में अपनी एक दूसरे की आंखें मिला के इशारा करके समझते हैं ना कि हाँ देखो कितनी झूठ बोल रहा है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट एक्सचेंजिंग लुक्स. बिना बोले एक दूसरे को कुछ कहना या समझना. ऑल राइट, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंजिंग लुक्स. गॉट एवरीवन? नाउ जैसे ही वो इजिप्ट पे पहुंचा रवि, मृदु एंड मीना दे एक्सचेंज लुक्स. दे स्टार्टेड थिंकिंग भाई कर क्या रहा है, व्हाट्स ऑल गोइंग ऑन. अभी तो ये कैट रॉयल कैट हो गई फ्रॉम द एंशिएंट पल्लवा किंग्स. ओके, नाउ इट्स अ डिसेंडेंट ऑफ अ ऋषि कैट. ओके, एंड नाउ ही इज मूव टू इजिप्ट and he is saying cats used to be worshipped in ancient Egypt. And now let's continue what else he wants to say about the cat. So first of all, we'll start with the meanings. Demand, you know, to ask for something in on extremely firm or aggressive way. Demand means आपको कुछ किसी से पूछना है, ठीक है, आप उसको फोर्सफुली कह रहे हो कि मुझे इस चीज का जवाब चाहिए ही चाहिए. ओके, दैट इज व्हाट यू आर डिमांडिंग. Bastet. What do you mean by bastet? A goddess usually shown as a woman with the head of a cat wearing one gold earring. Now Bastet is a goddess, an Egyptian goddess. Okay, just look at this picture beta. It's a bit small, but just have a look. She's wearing gold earring and her face is a cat's face with cat's ears, cat's face, all right, but she is a lady. Okay, she is called Egyptian goddess and name is Bastet. Okay, so now we will move on to the part. What does that have to do with anything? Mridu demanded. Now Mridu forcefully wanted to know कि इजिप्ट में अगर कैट्स की वर्शिप करते थे तो उसका अपने इस बात से क्या रिलेशन है. अभी के मोमेंट से आप क्या कहना चाह रहे हो? व्हाट डू यू वांट टू से, राइट? इफ पीपल यूज्ड टू वर्शिप कैट्स, लेट देम वर्शिप. व्हाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट दैट? ओके,
So Mridu started questioning Ravi now. I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess. Bastet. Yeah, that's it. So now you can see the picture of Bastet and just imagine what Ravi is trying to explain. Ravi is saying that this cat Mahendran is a descendant of Egyptian goddess Bastet. ठीक है, इतनी स्पेशल कैट है उनके पास में. He is just making his point for that कि ये कैट जो है हमारे पास ये इजिप्शियन गॉडेस की डिसेंडेंट है. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली. ऑल राइट, so just imagine what all Ravi is trying to say about the cat and all, right? So this was what we did in our third part of the chapter. We will continue with our next part, what all goes in this story. Hope you liked what we read today, and we will continue our next part in next class. Until then, take care. Have a great day, beta.